Hello everyone. Today we will discuss about RIP as a part of dynamic routing protocol. So RIP stands for Routing Information Protocol, and it is dynamic routing protocol, and it uses hop count for best path selection for from source to destination. It means it uses metrics. So RIP metric is hop count. It means, for example, if this one is your source and this one is your destination router, and you have three paths. First path has in between two router, and second path has in between one router, and third path has in between three router. And source want to send data from this location to that location, that is called your destination. So if you have three paths. Path number one has two central router, path number two has one central router, and path number three has three central router. So how to calculate your hop count or how to calculate best path according to hop count? So यहाँ पे RIP जो है होप काउंट कैलकुलेट करने के लिए जो भी राउटर्स उनके सेंट्रल में कनेक्टेड होते हैं उनको यूज करता है. फॉर एग्जांपल, पाथ नंबर वन हैज टू सेंट्रल राउटर, सो योर होप काउंट इज that is first router, second router, and third router. So path number one has three hop count, path number two has two, and path number three has three. अगर पाथ नंबर थर्ड की बात करते हैं तो पाथ नंबर थर्ड में टोटल जो आपका होप काउंट कैलकुलेट होगा वो 4 होगा. सो अकॉर्डिंग टू दिस सिनेरियो, route path number 2 is best path for data transportation from this location to that location, because path number 2 has less number of hop count. अगर इसके अकॉर्डिंग बात करते हैं तो पाथ नंबर 2 के पास टोटल 2 होप काउंट हैं. सो ये आपका क्या होगा? बेस्ट पाथ होगा. जो आपका पाथ नंबर 2 होगा ये बेस्ट पाथ कैलकुलेट होगा. एंड इट अलाउ द डेटा टू बी डिलीवर्ड एट हाई स्पीड इन द शॉर्टेस्ट पाथ. जो भी इसका शॉर्टेस्ट पाथ होता है, जिस पाथ में लेस नंबर ऑफ राउटर अवेलेबल होता है, लेस नंबर ऑफ होप काउंट होता है, उसको ये बेस्ट पाथ सिलेक्ट करता है. इफ यू talk about feature of RIP, so RIP is open standard protocol, and RIP uses classful and classless, both type of routing protocol. And RIP has there are two versions of RIP. First one is version 1. So version 1 is totally work with classful, and version 2 support classless and classful, both type of routing protocol. And it uses distance vector routing protocol. So distance vector routing protocol, it means source router will calculate best path according to less number of hop count. So in which path has less number of hop count, that is your best path for data transportation. And it will send update by using broadcast address 255.255.255.255. and administrative distance of RIP routing protocol is 120, and it will calculate best path according to hop count. So the metric of RIP is hop count, and it will support maximum number of hop count is 15. So you can use maximum 16 router in a single network, and it support load balancing of 4 equal paths, and it is best for small organization because it is secure, and it is less number of difficulties for configuration. तो आप अगर कॉन्फ़िगरेशन के अकॉर्डिंग बात करते हैं तो ये आपके स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन के लिए बेस्ट राउटिंग प्रोटोकॉल है एज ऑफ डायनामिक राउटिंग प्रोटोकॉल. अगर डायनामिक राउटिंग प्रोटोकॉल कैटेगरी में बात करते हैं तो ये आपका बेस्ट राउटिंग प्रोटोकॉल अवेलेबल है. सो
अगर RIP मुझे कॉन्फ़िगर करना है, RIP कॉन्फ़िगर करने के लिए आप इन कमांड्स का यूज करते हैं, राउटर स्पेस RIP, and next one is version space version 2. So it is additional. If you want to use RIP version 2, then you can run, otherwise it is not mandatory or no need to run version command. And next one is network space connected network ID. As you know, and dynamic routing protocol don't need to add distance or destination network ID or subnet ID. It uses only connected network ID, so only need to use connected network ID, no need to uh, configure or use destination network ID. So अब यहाँ पे हम RIP को कॉन्फ़िगर करते हैं। RIP कॉन्फ़िगर करने के लिए दो राउटर यूज कर लेते हैं, 2 या 3 राउटर जो भी आपको यूज करना है, आप अपने अकॉर्डिंग, अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग यूज कर सकते हैं। सो आई एम यूजिंग 3 routers for configuration and I want to use serial interface. So first I have to use or I have to add module in each of the router for serial इंटरफेस। सो यहाँ पे सीरियल इंटरफेस मुझे चाहिए, उसके लिए मुझे सीरियल इंटरफेस का मॉड्यूल ऐड करना है। सो यहाँ पे सीरियल इंटरफेस का मॉड्यूल मेरा ऐड हो गया एंड आई वांट टू यूज 2 स्विच फॉर router number 1 and router number 2 and some PCs for end users। तो जो मेरे पास एंड यूजर है उनके लिए कुछ पीसी यहाँ पे हम ऐड कर लेते हैं। देन यहाँ पे केबलिंग कर लिए, तो मेरा केबलिंग जो है रेडी हो गया। अब यहाँ पे मुझे नेटवर्क आईडी डिसाइड करना है। सो आई वांट टू असाइन 192.168.1.0 network ID for this interface, and I want to assign 192.168.2.0 network ID for this interface and 20.0.0 for LAN 2 and 10.0.0.0 for LAN 1। तो यहाँ पे मुझे क्या करना है, मैंने डिसाइड कर लिया है कि किस इंटरफेस पे कौन सा आईपी एड्रेस असाइन करना है, कौन सा नेटवर्क आईडी असाइन करना है। सो यहाँ पे राउटर नंबर 1 और राउटर नंबर 2 के बीच में 192.168.1.0 नेटवर्क आईडी यूज करना है एंड आई वांट टू यूज 192.168.2.0 नेटवर्क आईडी फॉर राउटर नंबर 1 एंड राउटर नंबर 2 एंड राउटर नंबर 3। राउटर नंबर 2 और 3 को कनेक्ट करने के लिए मुझे ये नेटवर्क आईडी यूज करना है एंड so let's assign IP address to all interfaces। so first of all router number, so router number 1 has 2 connected interface, first one is serial 1/0 and second one is fast ethernet 0/0। so first I have to select serial interface and IP address, and I want to assign IP address 192.168.1.1 and subnet mask। And no shutdown, I have to assign clock rate। so I have assigned IP address on serial 1/0 and need to assign IP address on fast ethernet 0/0। so I have another interface fast ethernet 0/0, select interface by using interface space fast ethernet 0/0, then IP address and IP address of this interface 10.0.0.1 and subnet mask 255.0.0.0 and no space shutdown। so I assign IP address on both connected interface in router number 1
and need to assign IP address on PCs. So 10.0.1, sorry 2, and my default gateway is 10.0.0.1 because I have assigned IP address on fast Ethernet 0/0 is 10.0.0.1. so मैंने इसको डिफॉल्ट गेटवे असाइन कर लिया। नेक्स्ट जो मेरा कंप्यूटर है, इस कंप्यूटर पे मैंने 10.0.0.3 असाइन कर दिया एंड डिफॉल्ट गेटवे सेम रहेगा। तो नाउ I should assign IP address on router number 2. So router number 2 has two interface, serial 1/0 and serial 1/1. So I want to assign IP address on serial 1/0, IP address 192.168.1.2 and subnet mask, ये मेरा सबनेट मास्क है। नो स्पेस शट डाउन। अब मेरे पास जो सेकेंड अंदर इंटरफेस है सीरियल 1/1, सीरियल 1/1 और यहाँ पे मुझे आईपी एड्रेस असाइन करना है 192.168.2.1 एंड सबनेट मास्क। शट डाउन, क्लॉक रेट। सो यहाँ पे आप अगर क्लॉक रेट असाइन करना है तो यू हैव मल्टीपल क्लॉक रेट बाय। तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, क्लॉक रेट अगर आपको सर्च करना है सो आप यहाँ पे क्लॉक रेट सर्च कर सकते हैं। इसमें से आपको जो भी क्लॉक रेट असाइन करना है अकॉर्डिंग टू योर रिक्वायरमेंट यू कैन चूज एनी ऑफ द नंबर फॉर क्लॉक रेट। सो मैंने यहाँ पे क्लॉक रेट असाइन कर लिया है। अब नेक्स्ट जो मेरा राउटर है राउटर नंबर थर्ड है जो ऑल्सो टू इंटरफेसेस सीरियल 1/1 एंड सीरियल सॉरी फास्ट इथरनेट 0/0। तो यहाँ पे मुझे आईपी असाइन करना है इंटरफेस सीरियल 1/0, आईपी एड्रेस 192.168.2.2 और सबनेट शट डाउन। नेक्स्ट मेरे पास I have another interface fast Ethernet 0/0 and IP address I decide to assign IP address on fast Ethernet 0/0 is 20.0.1 and subnet mask. Then no shutdown. मेरे पास जितने भी इंटरफेस है राउटर के सारे इंटरफेस पे आईपी एड्रेस असाइन हो गया है एंड नाउ I have to assign IP address on computer number 1 for 20.0.2 and default gateway 20.0.1 and now I want to assign 20.0.3 and default gateway 20.0.1। सो मैंने आईपी एड्रेस यहाँ पे असाइन कर लिया। नेक्स्ट मैंने नेटवर्क आईडी ऐड करा हुआ है। अगर आपको 1 by 1 एक इंटरफेस पे आईपी एड्रेस ऐड करना है आप यहाँ से ऐड कर सकते हैं। सो 192.168.1.1 ये मेरा फर्स्ट इंटरफेस का आईपी एड्रेस है। देन सेकेंड इंटरफेस पे जो आईपी एड्रेस है 192.168.1.2 एंड थर्ड इंटरफेस जो सेकेंड राउटर का सेकेंड इंटरफेस है वहां पे 192.168.2.1 ये मेरा आईपी एड्रेस है। एंड देन सेकेंड इंटरफेस पे 192.168.2.2 ये आईपी एड्रेस मेरा असाइन हो गया। ये सेम आईपी एड्रेस मैंने यूज करा हुआ है। देन अगर इस इंटरफेस की बात करते हैं तो राउटर के फास्ट इथरनेट 0/0 इंटरफेस पे 10.0.1 एंड नेक्स्ट इंटरफेस 20.0.1 और पीसीस को आप सेम नेटवर्क आईडी का कोई भी आईपी एड्रेस असाइन कर सकते हैं। सो मैंने यहाँ पे 10.0.3 और फर्स्ट कंप्यूटर को 10.0.2
and then 20.0.2 और 20.0.0.3 ये मैंने आईपी एड्रेस यहाँ पे असाइन कर लिया है। देन if you want to send a packet from this computer to that computer, so you can see your packet is failed. You can't send your packet from this location to that location because you have no routing protocol. So I want to configure RIP routing or I want to enable RIP routing protocol in this network. So यहाँ पे RIP routing असाइन करने के लिए जो फर्स्ट कमांड है राउटर स्पेस RIP। सो मैंने पहले ही बोला हुआ है कि अगर आपको वर्जन इनेबल करना है आप वर्जन यहाँ पे इनेबल कर सकते हैं, अदरवाइज नो नीड टू ऐड वर्जन कमांड। सो आई वांट टू इनेबल वर्जन 2, देन network space connected network ID. So router 1 has 2 connected network ID. First one is 192.168.1.0 and second one is 10.0.0.0. So I have to add both of the routing protocol in my network. So network space connected network ID 192.168.1.0 and the next one is 10.0.0.0. सो यहाँ पे मेरा जो कनेक्टेड नेटवर्क आईडी है राउटर 1 का ये ऐड हो चुका है। अब मुझे नेक्स्ट राउटर में सेकेंड राउटर, सो आल्सो सेकेंड राउटर हैज 2 कनेक्टेड नेटवर्क आईडी। फर्स्ट वन इज 192.168.1.0 एंड सेकेंड वन इज 192.168.2.0। सो यहाँ पे आप अपने आईपी एड्रेस के हेल्प से भी नेटवर्क आईडी कैलकुलेट कर सकते हैं। So router 2 has 2 connected network ID and now I have to add both of the routing both of the network ID in my network. तो यहाँ पे मुझे क्या करना है, दोनों नेटवर्क आईडी को अपने नेटवर्क में ऐड कर लेना है। फर्स्ट वर्जन स्पेस 2 देन फर्स्ट कनेक्टेड नेटवर्क आईडी 192.168.1.0 and the second connected network ID is 192.168.2.0. Now let's go with router number third. So router number third is also 2 connected network ID. First one is 192.168.2.0 and 20.0.0.0. So ये दो मेरा कनेक्टेड नेटवर्क आईडी है और इन दोनों कनेक्टेड नेटवर्क आईडी को मुझे अपने नेटवर्क में ऐड कर लेना है। नेटवर्क राउटर स्पेस RIP वर्जन 2 and network and connected network ID. So first connected network ID is 192.168.2.0 and second one is 20.0.0.0. Now we are able to send data from this computer to that computer because routing protocol has been enabled. So I want to check my routing protocol by using show space IP root command. Now you can see router number 2 has 2 connected network ID and 2 RIP. So R stands for RIP routing information protocol. तो यहाँ पे मेरा RIP जो है इनेबल हो चुका है। अब अगर राउटर नंबर थर्ड में चेक करते हैं तो यहाँ भी आप चेक कर सकते हैं टू शो IP and you can see router number third has 2 RIP network ID and 2 connected network ID. So these 2 network ID is directly connected to router number third and these 2 network ID is assigned for RIP. So now I am trying to send my data and you can see my data is sending successfully. So this is routing information protocol configuration.
And one more thing, RIP uses update timer of 30 seconds. It means it will send update every 30 सेकेंड टू ऑल कनेक्टेड राउटर्स। ये अपने नेटवर्क में जितने भी कनेक्टेड राउटर होते हैं उन सारे राउटर को हर 30 सेकेंड पे एक अपडेट सेंड करता है, जिसके थ्रू ये आपस में अपने डेटाबेस को एक्सचेंज करते हैं। एंड RIP यूजेज इनवैलिड और होल्ड टाइमर ऑफ 180 सेकेंड। ये RIP जो है 180 सेकेंड का होल्ड टाइमर या इसे आप इनवैलिड टाइमर बोल सकते हैं, यूज करता है। इट मींस इफ ए यूजर वांट टू और ट्राइंग टू सेंड डेटा टू अनदर राउटर एंड आफ्टर 180 सेकेंड इफ destination router or another router will not reply any of the update, so after 180 second your source router understand the another router is unreachable, so उसे unreachable काउंट कर देता है। and after 240 second source router will flush the पैकेट और टाइमर। सो RIP जो है फ्लश टाइमर, RIP का जो फ्लश टाइमर होता है 240 सेकेंड का, 240 सेकेंड के बाद ये उस टोटल डेटाबेस को, टोटल इंफॉर्मेशन को फ्लश कर देता है। अगर सेकेंड राउटर अनरीचेबल हो रहा है या टाइम आउट शो कर रहा है या कोई रिप्लाई प्रोवाइड नहीं कर रहा है तो। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, bye bye to all of you. We will meet at we will meet in next video.